रॉयल स्टैग बूम बॉक्स, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, आई थिंक एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है व्हेन इट कम्स टू म्यूजिशियंस. Not only it bridges the gap between the Bollywood music and the new age hip hop rap music, but also it gives a physical platform wherein artists from both the genres can come on one stage and perform for the audience. तो बहुत लोग कहते हैं, आई थिंक रॉयल स्टैग बूम बॉक्स ने वो किया है, एंड हेंस माई एसोसिएशन विद दिस कंटिन्यूज. नहीं तो नहीं करते हम. Royal Stack Boombox, as Badshah also said, it stands for really good musicality, firstly. All of us here have come together to cook up some really cool tunes and beats that can connect with not only our audience, but the youth at large. Not plugging in large just for the sake of it. But बहुत खुशी होती है जब आपको musically freedom मिलता है to do something हटके, because we always do our kind of music, but when there's another person, another artist in the room, तो गाना थोड़ा अलग बनता है. आपके तरीके का नहीं बनता है, ना ही उनके तरीके का बनता है. कुछ दोनों का एक कुछ मिश्रण होता है, which sometimes is beautiful, sometimes you don't expect it. I think most important is the energy in the room, and I think the energy on this stage is beautiful, so I think there'll be really amazing tunes coming out from all of us. And regarding the shows, I'm really excited to perform in Indore and Pune. These two cities have been really close to my heart. A lot of fans there as well, so can't wait to be there and perform for them and perform the song that we make as well as part of this project. And overall, really happy to be part of this project. Thank you so much. Great, great. Royal Stag Boombox is a new sound, because we have heard hip hop separately, we have heard Bollywood music separately, pop music separately, but this is an absolutely new sound, new energy, and a brand new collaboration between artists जिनको हमने कभी साथ में collaborate करते हुए नहीं देखा और हम imagine भी नहीं कर सकते. Like I would have never imagined कि मैं EPR जिनके साथ मैंने पिछले सीजन में कोलैबोरेट किया था. जब दो ऐसे आर्टिस्ट साथ में आते हैं जिनकी एक अपनी पर्सनल साउंड रही है, प्रोफेशनल तरीके से जो भी वो कर रहे हैं, और वो जब साथ में आएंगे, वो दोनों अपना बेस्ट जब देते हैं, एक नई साउंड बन रही है. दैट्स व्हाट बूम बॉक्स इज ऑल अबाउट. द सॉन्ग्स आर वेरी एजी, दे आर talking about whatever is youth experiencing right now of our country. और हमारी youth को हमेशा कुछ नया sound चाहिए. They are, they want to express themselves through music. So this collaboration means a lot to us because we get to express ourselves the way we want to. And melody and hip-hop beats and rap and something that is meaningful and yet creating value is what Boombox is all about. So that's what, as a passion pillar of music, is what it means to me. And that is why I'm very, very happy and excited to be part of Royal Stag Boombox. I think Royal Stack Boombox is offering a very fresh and unique concept to people, where they are bringing forth the melody of Bollywood and the rhythm and poetry of hip-hop. So, like I mentioned, hip-hop has the ability to just merge into anything. So, it is definitely a big step towards pushing the wave of hip-hop forward in India and pushing hip-hop artists in India. So, getting to collaborate with artists who come from their own field of expertise when it comes to melodies, it's going to make our job easier to merge with them through our words, So, I think they're going to bring the melodies, we're going to bring the words, and it's going to be amazing. The songs that come out of it are going to be beautiful. And at the end of the day, we create music in the studio to be able to translate that emotion onto stage. So I'm really looking forward to do that in front of all the beautiful people of Pune, where I'm going to be performing this year. Great. जो रॉयल स्टाग बूम बॉक्स है सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है, इट्स लाइक अ फेस्टिवल. और एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए? स्टूडियो, स्टेज, वो हमको मिल रहा है. और मैं तो शुरू से ही बहुत खुश होता हूँ जब भी मैं कोलैबोरेट करता हूँ किसी के साथ. इंसान को जानने का मौका मिलता है, उसके म्यूज़िक को जानने का मौका मिलता है. और जब आप किसी नए आर्टिस्ट के साथ बैठते हैं ना, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि यार मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये चीज़ भी कर सकता हूँ, वो चीज़. तो वो बहुत ब्यूटी है इस चीज़ की. और शुक्रिया
कि ये प्लेटफॉर्म दिया रॉयल स्टैग बूम बॉक्स ने, और मैं बस चाहता हूँ कि मैं खरा उतरूँ और आपको अच्छा गाना डिलीवर करूँ. If you're doing what you love, which is, I think, the point of Royal Stag Boombox, that you do what you love, you experiment with it, you grow with it, you create and you execute. I mean, I love the fact that we're getting to do both. We're getting to create, we're also getting to take it to the stage. And that's what I think, if you're doing something you love, you're gonna, probably, you can see it when the person is performing and you can feel it from the audience and back and forth. दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है एक अच्छी पिक्चर बनाना, है ना, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है एक अच्छा गाना बनाना. और जब आपके पास इतने बेहतरीन आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इतने माइंड ब्लोइंग नेक्स्ट लेवल गाने बनाए हैं, एंड आई एम श्योर दैट यू गाइज हैव प्रॉब्ली हर्ड इट एंड डांस ओवर इट, लेकिन एक फेस्टिवल में सब एक साथ आना, तो वो एनर्जी स्टार्टिंग में ही इतनी अमेजिंग है, तो जब वो ऑन ग्राउंड पहुँचेगी तब तक तो मतलब पता नहीं क्या तबाही होने वाली है. So yeah, I think it's all about living it large, and everybody will be living it large at Royal Stag Boombox on the festival day. So.